Subhanallah, Subhanallah, Shukranillah, Walhamdulillah, Shukranillah, Walhamdulillah. We continue on our journey of zikr of 40 days, and today is 34th day of our zikr. Pir and Shah, both are one Nur, our Mai and Bap, our mother and father. These both roles are encompassed in Imam. We are calling our mother and father our Imam. Pir Shah, 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 Pir Shah. Pir Shah, 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 Pir Shah. Pir Shah, Pir Shah, Pir Shah, Pir Shah, Pir Shah, Pir Shah. Today, I would like to share a beautiful kalam with you because we are calling upon our Mawla, and this is for lovers of Mawla. Maste Mawla, intoxicated with love for Mawla. And this is from this book, Guldasta Irfan. You can go to smileyLiterature.org.com, monoreality.org. You'll find this book. And this is a beautiful kalam. If I can have volunteer to read English translation, that would be wonderful. Bismillahirrahmanirrahim. Maste Mawla, intoxicated with love for Mawla. अगर तू मस्ते मौला है, अगर तू मस्ते मौला है तो आजा अश्क बरसाएं, तुझे गर फिक्रे पर्दा है तो आजा अश्क बरसाएं. जी. Intoxicated with love for Mawla. If you're intoxicated with love for Mawla, come, let us shed tears. If you're reflecting on the resurrection, come, let us shed tears. अगर दिल उससे गाफिल है, अगर दिल उससे गाफिल है, सदा शैदाए बातिल है, बहुत ही दूर मंजिल है, तो आजा अश्क बरसाएं. If your heart is forgetful of him, always in love with the false, then the destination is very far. Come, let us shed tears. दिले गमगीन फिदा हो जा, दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा. अगर ये काम मुश्किल हो तो आजा अश्क बरसाएं. O sorrowful heart, sacrifice yourself and be merged in him. If this task is too difficult, come, let us shed tears. क़ियामत आके रुकती है, क़ियामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत हो, गुजरना हो क़ियामत से तो आजा अश्क बरसाएं. Resurrection comes and stops if there is callousness of hearts.
If you wish to undergo resurrection, come, let us shed tears. सदाए गिरिया उजारी, सदाए गिरिया उजारी तबीबे इश्क सुनता है। अगर उसको बुलाना है तो आजा अश्क बरसाएं। The physician of love listens to the cry of Girya Ozari. If we wish to invite him, come, let us shed tears. चिहिल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी। चिहिल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी। अगर आना है इस दिल में तो आजा अश्क बरसाएं। Oh, the circle of 40 dervishes, where is your ardor? If you yearn to be in this heart, come, let us shed tears. नसीरे नसीरा इश्क मौलाना, नसीरा इश्क मौलाना अजब फिरदौस से आला है। नसीरा इश्क मौलाना अजब फिरदौस से आला है। बुला ले अपने हर साथी के आजा अश्क बरसाएं। O Nasir, love for our Mawla is a wonderful, supreme paradise. Invite each of your companions, saying, come, let us shed tears. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Thank you so much. With your permission, I'm going to recite this beautiful kalam because here it is a gathering of those who are intoxicated with love for Mawla. Let us all connect our heart, unite our heart together, seek His love, and let us shed tears because here this congregation is of those who are concerned about their soul. They do want this resurrection. They do want to elevate. They do want to see that supreme paradise. They don't want any callousness in their hearts. This gathering is the gathering of lovers. अगर तू मस्त मौला है, अगर तू मस्त मौला है तो आजा अश्क बरसाएं। अगर तू मस्त मौला है, तुझे गर फिक्र फरदा है, तुझे गर फिक्र फरदा है तो आजा अश्क बरसाएं। अगर तू मस्त मौला है, अगर दिल उस गाफिल है, अगर दिल उस गाफिल है, सदा शैताए बातिल है, बहुत ही दूर मंजिल है, बहुत ही दूर मंजिल है तो आजा अश्क बरसाएं। अगर तू मस्त मौला है, दिले गमगीन फिदा हो जा, दिले गमगीन फिदा हो जा, उसी में तू फना हो जा। अगर ये काम मुश्किल हो, अगर ये काम मुश्किल हो तो आजा अश्क बरसाएं। अगर तू मस्त मौला है।
क़यामत आके रुकती है, क़यामत आके रुकती है, दिलों में जब कसावत है, गुजरना हो क़यामत से, गुजरना हो क़यामत से, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। सदाए गिरिया जारी, सदाए गिरिया जारी, तभी भी इश्क सुनता है, अगर उसको बुलाना है, अगर उसको बुलाना है, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। चहल दरवेश का हल्का, चहल दरवेश का हल्का, कहाँ है तेरी दिल सोजी, अगर आना है इस दिल में, अगर आना है इस दिल में, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। नसीरा इश्क मौलाना, नसीरा इश्क मौलाना, अजब फिरदौस आला है, बुला ले अपने हर साथी, बुला ले अपने हर साथी, कि आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है, अगर तू मस्त मौला है, तो आजा अश्क बरसाए, अगर तू मस्त मौला है। It is only in the gathering of like-minded friends that we can shed tears of Giryazari. In this worldly life, worldly people, if they see people shedding tears, they would think of it as a sign of weakness, as of somebody in need or a problem. But when it is the gathering of Sufis, the Hakikatis, who are shedding tears in the love of Imam, it is totally different level of gathering. With love and affection, these gathering together, friends shed tears, desire to shed tears. कि चलो आकर हम गिरिया उजारी करें, कुछ इश्क और मोहब्बत की बातें करें। क्यों? कि हमको क़यामत से गुजरना है। क्यों क़यामत से गुजरना है? क्योंकि हमको इमाम की कुर्बत चाहिए, और इमाम की कुर्बत क़यामत के बगैर मुमकिन नहीं है। कदम कदम पर अपनी नफ्स को मारना है, कि मारते 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 हम एकदम फरिश्ता बन जाएंगे और इमाम की कुर्बत को पाएंगे। नसीरा इश्क मौलाना, नसीरा इश्क मौलाना, अजब फिरदौस आला है। It is a wonderful, supreme paradise to be in love with the Imam. Not this worldly life or worldly people or worldly things. All these are mortal. The supreme, wonderful paradise is only the love of our Imam.
Invite each of your companions saying, come, let us shed tears. And resurrection cannot come, elevation cannot come, if in our heart we have callousness, hasad, gibat, gila, lying, comparison, gossiping, all lobh, moh, maya, ahankar, gurur, whatever sinning we do know about from Ginan, Quran, Farmans, any of that kasawat, any of that dirt is in our heart, it is very difficult to elevate ourselves. Therefore, we seek to shed tears because we have realized in this journey of knowledge that our soul is truly dirty. That's why peers have said, Kapada dhove so kya hua, dil dhove so paave. And there is only one way to wash all the dirt from this heart. It is only come, let us shed tears. Shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah. I'm truly blessed to be in gathering of lovers because it is only lovers of Imam that we can talk like this. Otherwise, who has time to talk of love, love of our Imam, and seek knowledge, identify what flaws we have. Shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah, ya Mullah, ya Mullah. I am truly grateful for all these friends who join Mullah. Ya Mullah Meherban, Ya Mullah Meherban. It is only their blessed soul, Mullah, their angelic soul, Mullah, which helps these Nachis to be able to serve you, Mullah. Ya Mullah, be with these Nachis, Mullah, be the light on the tongue, Mullah. Ali Allah, Madad Farma, Al-Wahidul Qahar, Ali Allah, Madad Farma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will continue our study of Farman, Usul. Before we start discussing Farman, yesterday when we were discussing Kalam-e-Mawla, after the session I received actually quite a few comments and questions on WhatsApp. And as we are studying Farman, Kalam-e-Mawla is also Farman, and I thought it is important to not wait until next week to respond to these questions because it is all interrelated. So one of the questions which is very interesting came up is one of the dearest friends said, I still do not understand what do you mean when you say check pulse. And it seems that we do need to practically do it together to realize what does it mean when Mola says, apni nafs ko tatolo, naar tapasna. In English we say check pulse. जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारी पल्स चेक करता है और बताता है कि भाई we need to investigate, diagnose कि हार्ट कंडीशंस हैं कि क्या है, whatever is wrong with us. बिल्कुल इसी तरह से हमें खुद अपनी पल्स को चेक करना है. इसके क्या माना है? इमाम के फरमान के मुताबिक before we go to bed, we should not go to bed when we are exhausted and tired. We should have some energy left when we go to bed, 30 minutes, 45 minutes. हम बिस्तर पे बैठें, थोड़ी तस्बीह निकालें, जिक्र करें, and then sit in reflection. किस तरह से कि ख्याल करें कि सुबह जब उठे तो उठ के क्या नियत की थी, कोई नियत की थी, कोई इंटेंशन बांधा था कि आज जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे. इसके बाद क्या किया, नाश्ता किया, जॉब की तैयारी की, ड्राइव करके गए तो ड्राइव करते वक्त क्या ख्यालात थे, जॉब पर क्या हुआ,
घर के अंदर थे तो क्या ख्यालात थे दिमाग के अंदर, कितना जिक्र किया होगा मैंने, कितने लोगों को मैंने जज किया, कितनी गॉसिपिंग की थ्रू टेक्सटिंग, while talking to friends at work, कितनी बुराइयां की, कितनी कंप्लेन्स की, कितना शुक्र किया। दिल की हालत कैसी है? मेरे दिल के अंदर सुकून है कि एंजाइटीज है, वरीज है, फियर्स है? शाम को जब घर आके डिनर किया सुकून से, बिस्मिल्लाह कहा था, मौला के नाम लेके खाना खाया था, क्या ये दुआ की थी कि मौला ये जो खाना मैं खा रही हूँ तो उसको मेरे लिए मेरी रूह की खुराक बनाना मौला। जिस्म तो चलेगा लेकिन जिस्म की एनर्जी के साथ मौला मेरी रूह को भी खुराक देना। ऐसी कोई नियत की थी, ऐसी कोई दुआ की थी? फिर जब जमात खाने गए या घर में दुआ पड़ी, दुआ में कितना ध्यान था? और अभी जब बिस्तर पर आए तस्बीह निकाली तो कितना ध्यान से निकाली? क्या मौला को याद किया? मौला से कुछ बातचीत की? कोई ऐसा दिन के वक्त ऐसा ख्याल किया जिससे मौला हम पे खुश हो? ये तमाम बातें पल्स चेक करने में आती है। All these things are done to find out what was the state of our mind, our heart during the daytime. Now, there are some people who would like to write journals. Some people would like to write it down. What did I do in the morning? What did I do in the afternoon? मेरे thoughts क्या थे? Every individual is different. Personally, I can tell you when I started practicing this, I would write. I like to write. I would write down what are my goals, the way we do it in worldly life, right? Similarly, Navroz is going to come. So हमारे नए साल से हमारे goals क्या हैं? रूह के लिए क्या गोल है? हमारे रूह के लिए क्या गोल है? जिस्म की बात नहीं हो रही, जिस्म की तो हमें काफी ट्रेनिंग है, we all know that. डिपेंडिंग हमारा कंफर्ट किस में है, हम किस तरह से यादगिरी में रह सकते हैं, जर्नलिंग के जरिए के बैठ के सोचने के जरिए से, आई डोंट नो, वट एवर इज कंफर्टेबल। आज के जमाने में फोन भी है, कंप्यूटर्स भी हैं, पेपर भी हैं, वट एवर फील्स कंफर्टेबल। रात के वक्त बैठ के वी नीड टू थिंक हमने पूरे दिन क्या किया, क्यों ऐसा क्यों करना है? क्योंकि नंबर 1 इमाम का फरमान है। नंबर 2, if we all have come here and truly we intend to be staying in remembrance, यादगिरी में रहना है, अपनी रूह के लिए सुजाग होना है, रूह के करीब जाना है, तो यादगिरी जो है वो हकीकी मोमिन का काम है। यादगिरी सबकी बस की बात नहीं है। What does that mean? कि हमें एक प्रैक्टिस की आदत बिल्ड करनी है, एक हैबिट बनानी है। यादगिरी ऑटोमेटिक नहीं होती है, अजंपिया जाप ऑटोमेटिक नहीं होता है। One has to work hard to make it अजंपिया जाप। अजंपिया जाप तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं उसको पार करना है, उस पर चढ़ना है। पल्स चेकिंग इज वन ऑफ द वे दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमें किन गुनाहों ने हमारे पांव के अंदर रस्सी बांध के रखी है कि हमारे रूह को उड़ने नहीं मिल रहा। इसलिए जो पल्स चेक करने की आदत है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वरना इमाम क्यों फरमाएंगे हमें फरमान? ये इमाम का हुक्म है। तो जो भी रात को सोने से पहले पल्स चेक करता है, दर हकीकत में वो इमाम के फरमान की फरमान बरदारी करता है। तो यहाँ हम जब मिलते हैं, हम एक ही चीज तो सीख रहे हैं कि इमाम के करीब कैसे जाना, इमाम की फरमान बरदारी कैसे करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, एवरी नाइट check pulse. Now, after checking pulse, what do? You reflect कि भाई मैंने जो सोचा था, जो इंटेंशन सुबह उठ के बांधा था, did I do what I intend to do? For example,
Nowadays we are doing this zikr together, right? Today is 34th day and we are doing Pir Shah zikr. Roughly how much I would have done it? It's a small zikr, so बहुत ज़्यादा हो सकता है. Did I do 100 times? Did I do 200 times or 1,000 times or more than that? How much did I do? So that's one of the question. And remember कि किसी को दिखाना नहीं है हमें, ये हमारा अपना रिपोर्ट कार्ड है. हाँ, जो फरिश्ते बैठे हैं, there is nothing hidden from them. They know exactly. So this is between you and your imam. Lying तो सवाल ही पैदा नहीं होता है. ये प्रैक्टिस जो है हमें ये सिखाएगी, एक्चुअली हमें याद दिलाएगी कि when I'm doing this, whatever I'm thinking, whatever I'm writing, reflecting, these both angels are writing, listening and witnessing my practice. जब ये फरिश्ते देखते हैं कि हम कोशिश करते हैं पल्स चेक करने की, तो नंबर 1 ये लिखा जाता है कि you know what, this is मोमिन सालिक and he did फरमान बताया. And if we were really honest with ourselves, pamper nahi kiya ki nahi mola, I didn't do what I was planning to do, or I didn't do what I should be doing. I need to do better. Make a plan that tomorrow when I wake up, I have to set an intention and I have to do better than yesterday. Every day we need to practice this. Every day. Eventually, the objective of doing this practice is that we become so conscious, so aware, as soon as we make a mistake, we remember it. So pulse checking becomes a constant practice. And that's exactly what it means when Mola says that when a traveler is sitting in a train and he has a mal, treasure with him, right? अगर मुसाफिर माल के साथ सफर करता है तो उसे ऊंग भी नहीं आती. He doesn't even yawn. When a traveler has a money with him and he's traveling in a train, let's say, he would not even yawn. Why? Because he knows if he'll fall asleep, somebody will steal his money. That is our status, our condition. So what we are saying, in other words, कि आज से अगर हम पल्स चेक करने की प्रैक्टिस रात को करते हैं, इवेंचुअली ऑब्जेक्टिव ये है within 3 months, 6 months or a year, ऐसा होगा कि रात को नहीं, immediately, जैसे गलती की फौरन ख्याल कि भाई I made a mistake, Mola, I'm so sorry. I should not have judged. I should not have said this. Why did I do that? उसी वक्त we feel so ashamed and दिल के अंदर गिरियाज आई हो कि oh Mola, please forgive me. I'm going to do better the next moment. I will not repeat this mistake. Because these people who are here, they are serious people. We have realized we don't have any time to waste. We need to change and grow and move further. आगे बढ़ना है, मंजिल बहुत ही दूर है. So this is about checking pulse. I hope that I have gone in detail to make it clear कि इसका क्या मतलब है. पल्स चेक करना, अपने आप को टटोलना, अपने आप को तपासना, अपने आप को रिफ्लेक्शन में डालना, to know where do we stand. We are not going to live our life unconsciously. We'll be awake, alert, and exactly know what we are doing. So that was it. And the next question is, I think when we study farman, it will come into that. So I think 2 of the questions will cover during our study of the farman. So this farman is Dar es Salaam, September 29th, 1899. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. कोई बुलबुल इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ने वाली हो, उसे सोने के पिंजरे में बंद करके अच्छे अच्छे मेवे, पानी वगैरह दिया जाए, तब भी उसका दिल चाहेगा कि उड़ जाओ. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके पर काट दिए जाएं, उसके बच्चे जमा हो जाएं और 50 साल के बाद इन्हें बाहर निकाला जाए तो वो उड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश कैद खाने में हुई है. फजा में घूमने या परवास करने की खूबियों से वो ना वाकिफ हैं. तुम भी बेखुद हो,
अपने दीन की असल खूबी तुम नहीं जानते, उसके मायने नहीं समझते। दीन की खूबी क्या है उसका इल्म तुमको नहीं। तो हमने बहुत डिटेल में जाके बात की थी कि परिंदे की क्या मानी है, उड़ने की क्या मिसाल है। और जब मौला ऐसे सख्त फरमान करते हैं कि 50 साल अगर पिंजरे की आदत डाली और इसके बाद निकालें तो उड़ नहीं सकेंगे। और हमने बात की थी कि ये शॉक थेरेपी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज हमारी उम्र 50 साल की 60 साल की है और हमें इल्म अब मिला है तो हमारे लिए तो कोई उम्मीद या कोई होप नहीं है। ये बात हरगिज हरगिज नहीं है। इस्माइली मजहब में हमारे इमाम का ये फरमान है, ये हुक्म है कि ना उम्मीदी गुनाह है। वी आर वेरी होपफुल। मोमिन सालिक जब भी जागता है और वो हकीकत को फॉलो करता है, उसके पास ये ताकत है कि ही कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू। व्हाई? क्योंकि इमाम की दुआ आशीष हमारे साथ है। कुरान ने भी क्या फरमाया? ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। नाउमीदी नहीं है हमारे मजहब में। तो ये बात बहुत बहुत जरूरी है कि किसी को भी इल्म महफिल में बैठ के गिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें अशेम हम होंगे, हमें अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, पशेमानी होती है, होनी भी चाहिए। We should be ashamed of ourselves because we've not been serious. गिल्टी नहीं होना है, क्योंकि गिल्ट के ट्रैप में रह के अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्लीज डू नॉट बी गिल्टी। अपने आप को सख्ती से अपना मुआयना करना है, अपने आप को पैम्पर नहीं करना है और अच्छा वॉरियर बनाना है, ट्रेनिंग करनी है और इम्प्रूव करना है अपने आप को और सख्ती से खुद का हिसाब किताब लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिल्ट में, दुख में हम नहीं रहेंगे। इट्स ओके वट एवर हैपन इन द पास्ट, टुडे इज अ न्यू डे एंड वी विल हैव अ गुड डे टुडे। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ एज अ मोमिन सालिक। Now, in this Farman, Mola says that this bird whose wings have been cut, they are in the cage and they have children, and then they will not know what is the taste or fun of flying in the air. Again, this is an example. Imam is speaking in allegory. The Imam says, "Tum bekhud ho. You're living your life as unconscious. तुम भी बेखुद हो। अपने दीन की असल खूबी तुम नहीं जानते। You do not know what is the beauty of your religion. इसके मायने नहीं समझते। दीन की क्या खूबी है इसका तुमको इल्म नहीं। We don't have knowledge. That was another question. We do not have the knowledge which we need. तुम बेखुद हो, meaning that we are living, but we are living very unconsciously, and Mola does not like us to live unconsciously. And then Mola says, तुम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम इस्माइली मजहब में रखा हुआ है और कहते हैं कि हम इस्माइली हैं, लेकिन इस्माइली मजहब क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसके मुतालिक इन्हें कुछ मालूम नहीं। वो नादान है। The word nadan is ignorant. So Mola is very clearly saying that there are so many Ismailis, लेकिन इस्माइली मजहब में क्यों है, क्या मतलब है? They don't know anything. They do not know anything. So this friend who had asked this question, you mentioned in the lecture that those who go to Jamaat Khana, pay the son and do bandagi, all they do with blind faith, तो उसका कोई फायदा नहीं है। I humbly would say that I was making a point. ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होता है, लेकिन रिमेंबर कि मिसाल लेते हैं कि अगर हमारे पास हीरे जवाहिर हो और उसको पत्थरों के साथ रखा जाए, हो सकता है कि अगर हमको हीरे की पहचान नहीं होगी तो हम पत्थर उठा लेंगे, क्योंकि पहचान नहीं है। पहचान कैसे आएगी कि सामने हीरा है, जवाहिर है? अगर कोई जौहरी की ट्रेनिंग ले,
को ये ट्रेनिंग ले कि भाई पहचान कर सके कि भाई डायमंड को कैसे पहचानना है और पत्थर का फर्क कैसे करना है, क्योंकि पत्थर और प्लास्टिक और डायमंड समटाइम्स दे ऑल लुक अलाइक कलर वाइज और व्हाटएवर वाइज, तो फर्क तो नहीं कर सकेंगे। जैसे इमाम ने फरमाया कि तुम जो है अलमास हीरे जवाहर को छोड़ के कांच के खिलौनों के साथ खेलते हो बिकॉज दे आर ब्राइट लुकिंग। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि इल्म से वी डू नो कि हम क्या कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है। अनदर एग्जाम्पल, अगर नीयत जमात खाने जाके ये है कि मौला I have come to जमात खाना, you know what मौला, after this I will go to my work, please bless me with a good business at work, give me profit. Mawla will say, okay, is that what you want? I'll give it to you. But tell me, this business and the profit, how long is going to last with us? Tomorrow we are going to die. ना business आया ना profit आया साथ, क्योंकि पता ही नहीं है कि जमात खाने जाके मांगना क्या है। हमने अपनी रूह को तो पहचाना नहीं है, अपनी अक्ल की जो अहमियत है उसको जाना नहीं है, तो क्या मांगते हैं? जिस्म की जिंदगी, जिस्म की बेहतरी, जिस्म की आशाइश। तो ये नादानी की बातें हैं। अब ऐसा शख्स अगर जमात खाने जाता है, ब्लाइंड फेथ से जमात खाने जाता है, इबादत करता है, दसूम भी देता है, जो भी क्रिया है जमात खाने की करता है, तो ये तमाम काम ऐसे हैं कि हर काम का जो फायदा है ना, वो लेट्स से एग्जाम्पल के लिए कि हर क्रिया का फायदा $100 है, 100 रुपीज है, ठीक है। बट बिकॉज एम नहीं है तो उसका रुपी का फायदा होता है। तो रुपया रुपया जमा करेंगे तो 100 भी नहीं बनेगा, लेकिन अगर 100 जमा करेंगे तो 1000 प्लस हो जाएगा। अगेन ये दुनियावी हिसाब किताब की मिसाल है टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इल्म से जो हम दुआ पढ़ेंगे, इल्म के साथ अगर हम दसूम देंगे, इल्म के साथ जब हम इबादत करेंगे, तो हम बहुत अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसका फायदा क्या है। अदरवाइज इमाम को ये जरूरत नहीं थी कि इमाम कहें कि जिन्होंने अपना नाम इस्माइली मजहब में रखा है, कहते हैं कि हम इस्माइली हैं, लेकिन इस्माइली मजहब क्या है, उसकी खूबी क्या है, इसके मुताबिक इन्हें कुछ इल्म नहीं, नादान है, ignorant. Now I would like to show one of the Quranic words, because remember, we think that Quran, we don't know Quran, we don't understand Quran. But if we were to, so this is chapter 17, Surah Al-Ashra, the night journey. And the verse is 72. And it beautifully says, but those who are blind in this world will be blind in the hereafter and most astray from the path. और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा रहा और रास्ते से बहुत ही भटका हुआ रहेगा, बहुत ही दूर। Now question here is, how many people do we see in blind? Is it the physical blindness we are talking about, and then hereafter भी blindness की बात हो रही है? यहाँ पे जो बात हो रही है वो नादान लोगों की बात हो रही है कि जो दुनिया में इल्म से अंधे हैं वो आखिरत में भी अंधे रहेंगे। तो नतीजा क्या होगा? They'll be most astray from the path, most astray from the path. क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि जो हकीकत की शनाख्त है, हकीकत की जो पहचान है, वो जिंदगी के अंदर करनी है। रिमेंबर, हम जब बात करते हैं कि भाई ये भाई या बहन दुनिया से गुजर गया, मौला उसको असल मकाम पे पहुंचा है, लेट्स से असल मकाम के सामने वो पहुंच गए, पहचान ही नहीं पाएंगे। क्यों? दुनिया में नहीं पहचाना तो आखिरत में कैसे पहचानेंगे? जो पहचानने का काम है इंटेलेक्ट को यूज करके, वो दुनिया के अंदर है। अगर दुनिया में रह के हम पहचानेंगे तभी हम आखिरत में कामयाब होंगे, क्योंकि पहचान जाएंगे कि इमाम का नूर कहाँ, कैसे, क्या है। वरना क्या होगा? जो अंधा इस दुनिया में है वो वहां भी अंधा होगा, भटकता रहेगा। तो अगेन इमाम के जो फरामीन है उस पर हमें बहुत तवज्जो देनी है कि इमाम फरमाते हैं कि इस्माइली मजहब क्या है, इसकी खूबी क्या है, इसके मुतालिक इन्हें कुछ इल्म नहीं।
वो नादान है। अगर हम पल्स चेक कर रहे हैं, we do need to reflect, are we those ignorant? Did we do those actions के ignorant के actions हैं, or did we behave like someone who has some knowledge? Now those who have knowledge, their behavior changes. They would break their bad habits. They will change their actions. आमाल की पाकीज़गी शुरू कर देंगे, अपने आप को पाक करना शुरू कर देंगे। पल्स चेकिंग की प्रैक्टिस में हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा क्या स्टेटस है। Then Imam is explaining कि कैसे हमें नादान नहीं होना चाहिए। Imam says, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सूफी ख्याल में दिल लगाओ, इससे भी ऊपर जाने का ख्याल। ना सूफी मजहब, मौला says नेक्स्ट लाइन में कि सूफी मजहब जो है तरीकत है, फिर हकीकत में पहुंचोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगोगे, इल्म वाला रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगा, वो एक दर्जा मुकम्मल करके दूसरे दर्जे में पहुंच सकेगा। तो मौला सेस कि तुम सूफी में दिल लगाओ। अब सूफी मजहब इस तरीकत, बट व्हाट आर वी ट्राइंग टू गेट फ्रॉम सूफी मजहब? डू वी नो सूफी मजहब में जो है ना टीचर्स होते हैं जिसको शेख कहा जाता है, दे आर शेख। नाउ दीज शेख students are supposed to follow no matter what age, those who want to learn and go further, and they have to do whatever the teacher says. One of the beginning training is that sheikh would tell them to go out and beg for food, because there will be no food for you. If you don't beg, you will not get any food. There's a story that one of the king, एक बादशाह है, वो अपने शहजादे को सूफी ट्रेनिंग के लिए एक शेख के पास भेजता है। अब वो शहजादा है बादशाह का और बेटा है, और मुर्शिद के पास जाता है, तो मुर्शिद जो है वो एक प्याला देता है। Go back for food. I am the prince. How can I beg for the food? If you want to eat, you got to beg. One day passes, 2 days passes, third day he's dying for hunger. खड़ा हुआ, and then he has to ask people. And when you go door to door asking, some people, you know, curse you, say bad things to you, they mistreat you. And this prince who has lived in such a lavish, luxurious life, and now he has to accept, tolerate all the demeaning done by the people to get some remains of their food so he can fill his belly. What a strict exercise to kill the ego. Imam doesn't ask us to do that. Imam is saying that I trust you. I trust you that you can do this practice yourself on you. That is mercy of Imam. That is rahmat of Imam. But again, जिम्मेदारी तो हमारी हो गई. Are we pampering our ego, keeping our ego, or becoming very strict in our training to become a warrior, true warrior? That is what Imam's expectations are here. Mola says, तुम आहिस्ता आहिस्ता सूफी में ख्याल करो. Mola understands. Mola says, I'm not expecting कि overnight तुम सूफी बन जाओगे. नहीं, आहिस्ता आहिस्ता. Every day pulse check करके, if you become better, इबादत में उठे कि नहीं उठे, जागते रहे कि नहीं जागे, कितना जिक्र किया, कितना बेध्यान हुए, हर चीज का ध्यान करके पल्स चेक में अपने आप को लिख के रखना है, तो हर दिन बेहतर होना है. कितनी दफा हमारे अंदर गुरूर आया, प्राइड आया, अपनी तारीफ हुई तो अच्छा लगा, खुशी हुई. शैतान assesses our weaknesses and attacks from that area only. And nobody knows हमारी क्या weakness है. Each individual is different. हम तमाम की जो खामियां हैं, flaws है, they are different. We know ourselves कि हमारे क्या problems हैं, क्या हमने लिखे हैं, do we know हमारे problems क्या हैं, and then we are critically working on it. सूफी में ख्याल करो मतलब ये कि you do need to sit with a checklist. सूफीज में प्रैक्टिस होती है to make the checklist कि भाई भीख मांगनी है. क्यों? ताकि अपनी ईगो को तोड़ना है. रोजा रखना है ताकि भूख की आदत हो. नींद कम घंटे करनी है ताकि जिक्र के लिए ज्यादा जाए. ये तमाम चीजें लिस्ट में होती हैं.
Those smileys, those who are seekers, who are serious, जिनको आगे बढ़ना है, इमाम फरमाते हैं उनको, तुम भी आहिस्ता आहिस्ता सूफी में ख्याल लगाओ. Then don't stay there. उससे भी ऊपर जाने का ख्याल करो. सूफी मजहब तरीकत है. We will learn all the practices कि कैसे फास्टिंग करनी है. Not the fasting of Ramzan month. No. This is the fasting of every day. कौन सी फास्टिंग? आमाल की पाकीज़गी की फास्टिंग. कम खाने की फास्टिंग. मौला इज नॉट सेइंग कि तुम भूखे रहो, रोजे रहो, रोजा रखो. नहीं, खाओ, खाओ ताकि सुबह जाग सको. सूफी मजहब तरीकत है, फिर हकीकत में पहुंचोगे. जब तक हम इन प्रैक्टिसेस को नहीं करेंगे, sometimes I give this visual image that if we are a warrior, अगर हम बैतुल ख्याल में हैं, हम लश्कर हैं और हमें जो है अपनी ईगो को मारना है, नफ्स को मारना है, और हमको जो है वो ट्रू हकीकी लश्कर इमाम का बनना है, तो हैव एन इमेजिनेशन कि हम खुद है, हम वी आर द ट्रेनर, वी आर द टीचर, वी आर द शेख, और हमारे हाथ में हंटर है, और इस हंटर को हमको अपने आप को ही मारना है. किसको? जो नफ्स है, जिसने हमको अपना गुलाम बनाया हुआ है. उस नफ्स को इतनी सख्ती से कंट्रोल में करना है कि उसकी ये ताकत नहीं हो कि वो हमें कंट्रोल करे. हमारा जो इंटेलेक्ट है वो बादशाह है. कैसे ये जिस्म की ख्वाहिश इंटेलेक्ट को टेम कर ले? नहीं हो सकता. जिस तरह से हमने समझा कि हमारा जिस्म है, हमारी रूह है और हमारी अकल है, इसमें बादशाह कौन है? हमारी अकल है. अकल जो कहती है वो हमें करना है, ना कि जिस्म चाहता है. मुंह का सवाद कारण तू कूड़ कमाया, मीठा टेस्टी खाना खाना है, खा लिया और सुबह इबादत में सो गए. तो ये तमाम मिसालें हैं इस ख्याल को दिल में लाने के लिए कि किस तरह से हमारा जिस्म जो है वो हमारी इंटेलेक्ट को ओवर पावर कर लेता है. इंटेलेक्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए वी स्टे इन जिक्र, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिक्र. जिक्र से क्या होता है? यादगिरी में रहते हैं. यादगिरी से क्या होता है? वी बिकम कॉन्शियस. व्हेन वी बिकम कॉन्शियस, हम गुनाह करने से बच जाते हैं, और गुनाह करते हैं तो फौरन पशेमानी करते हैं, तो वो करते हैं अपने आप को हंटर से मारते हैं ताकि हम दोबारा उस गुनाह को रिपीट नहीं करें. फिर क्या होता है? फिर हकीकत में पहुंचोगे, तुम आहिस्ता आहिस्ता उड़ने लगोगे. इल्म वाला रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगा. Without knowledge, without true knowledge, there is no way to elevation. There is no way to elevation. Now, one of the friend asked, now at this time in my life, I am attending these classes since COVID. Is it not enough? Would you say that I'm attending any classes? So again, very humbly, I would say कि जितनी भी जनरल क्लासेस होती है, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाता है, समझाया जाता है. आमाल की पाकीज़गी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द रिचुअल्स इन जमात खाना, इबादत में कैसे बैठना है, कैसे वॉरियर बनना है, ये तमाम चीज़ें हमें समझाई जाती हैं, यादगिरी दिलाई जाती है. लेकिन इल्म में आगे बढ़ने के लिए, सीरियस लर्नर्स बनने के लिए एडवांस लर्निंग की बहुत सख्त ज़रूरत है. जनरल क्लासेस में मिक्स लेवल्स होते हैं और सबका इंटरेस्ट नहीं होता है टू बिकम सीरियस एंड टू एलिवेट. Those who are serious and those who want to elevate, they do need to seek knowledge further on. जब तक हम इल्म हासिल नहीं करते हैं, तब तक जिस तरह से हमने इस कुरान की आयत में पढ़ा कि जो यहाँ अंधा है वो वहां भी अंधा होगा. अब जो अंधा है, इग्नोरेंट है, जो नादान है, उसके भी तो दर्जात हैं, उसके अंदर भी तो दर्जात हैं. क्योंकि नादानी कोविड से पहले ये थी कि मालूम ही नहीं था कि वॉरियर क्या होता है, जमात खाने क्यों जाते हैं, इबादत कैसे करनी है, दुआ के क्या माना है, हकीकी इल्म क्या है, अमाल की पाकीज़गी की समझ कितने लेवल की हमें होनी चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद समहाउ हमें ये चांस मिला, हमने लर्न कर लिया. शुक्र लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. इज दैट ऑल? क्या आगे पहुंचना है?
तो सवाल ये होगा मेरा आपसे, दोस्त जिसने ये सवाल किया, कि जो मौला अली का कॉल है, जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया अपने खुदा को पहचाना। मन अरफा नफ्सही फ़क़द अरफा रब्बी। तो मेरा सवाल ये है, have you recognized yourself? Do you know who you are? If you do, shukran lillah walhamdulillah. If you don't, that means that this फरमान इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ती है। We need to know कि कितने दर्जे हैं और हर दर्जे का इल्म कैसा है। क्या मेरे पास तमाम दर्जात की तालीम है? अगर है तो शुक्र, अगर नहीं है, how do I learn that knowledge? What does it require me to do कि मेरे पास आगे का इल्म हो? आगे के इल्म के लिए जो कमिटमेंट, जो सीरियसनेस चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम चाहिए, क्या मेरे पास है? Am I really sincere? कि I'm still kind of weighing my choices कि ये करना है कि वो करना है। Remember कि दो तलवार एक शख्स नहीं रख सकता है। What does it mean? उर्दू की कहावत है ये कि एक मयान में दो तलवार नहीं रहती। It means कि you cannot be standing in two boats in one point in time. Either you are in this boat or that boat. If you are trying to put your feet in both the boat, एक यहाँ पे भी एक वहाँ पे भी, you will fall surely. तो आपका क्या इंटेंशन है, आपका सीरियसनेस का लेवल क्या है, कहाँ खड़े हैं, कितना आगे बढ़ना है? Again, this is very individual decision. हर एक का दिल नहीं चाहता है कि वो इसमें आज़म की प्रैक्टिस को ले, कमिटमेंट करे इमाम से और इबादत के लिए उठे। ओनली सीरियस सीकर्स ही हैं जिनको नूर की तलाश होती है, वो इमाम से कमिटमेंट करते हैं कि या मौला, आई डू वांना टेक बोल, आई डू वांना डू बंदगी। तो ये जो आगे की बातें हैं, ये तमाम उन लोगों के लिए हैं, those who are truly serious seekers. They truly understand that they have to invest time. Remember, जब हम इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, द वे वी हैव लर्न कि हमारा जो जिस्म है, इसके 3 दर्जात हैं, राइट? फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। इसी तरह से जब दसोन की बात करते हैं, तो दसोन भी फिजिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल है। अगर हम समझते हैं कि हम बहुत रेगुलर हैं, हमने दसोन जो हमारी कमाई की हम चौखी दसोन दी है, माय क्वेश्चन वुड बी कि आपने रूहानी की रूह की दसोन दी है, अकल की दसून दी है, कि अकल को तो सिर्फ दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया है, सारी जिंदगी यू बिकेम वेरी प्रोफेशनल और बैलेंस्ड और रिच और व्हाट एवर लग्जरियस लाइफ, क्योंकि इंटेलेक्ट का यूज सिर्फ वर्ल्ड की इंप्रूवमेंट के लिए किया। क्या आपने इंटेलेक्ट को, हैव यू इन्वेस्टेड इंटेलेक्ट इन नॉलेज, ट्रू नॉलेज? सिमिलरली रूह की भी है, तो रूह की दसून दी है, अकल की दसून दी है? नहीं दी है। कितना टाइम बाकी है हमारे पास? डू वी वांट टू कैच अप ऑन द दसून वी मिस्ड? तो ये तमाम सवाल जो है क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। कौन करेगा अपने आप से? जो इस फरमान को समझेगा, जो मौला फरमाते हैं कि इल्म वाली रूह दर्जा बदर्जा ऊपर चढ़ेगी। विदाउट ट्रू नॉलेज देयर इज नो वे वन कैन एलिवेट एनी फर्दर। फिर मौला फरमाते हैं वो एक दर्जा मुकम्मल करके दूसरे दर्जे में पहुंच सकेगा। ऐसा नहीं होता है कि टुडे रियली आई वांट टू नो एवरीथिंग, इसको फोन कर रहे हैं, उसको फोन कर रहे हैं, इस क्लास में जा रहे हैं, उस क्लास में जा रहे हैं, डेस्परेट, सब खा लो आज एक साथ। If we cannot do that in physical life, okay, let me just put my all food outside, breakfast भी है, lunch भी है, dinner भी है, then Friday को party है, Sunday को party, let me keep all the food in front of me and I will eat all right now. I cannot do that. I will die. Similarly, same principle is here in true knowledge. There is no way we can get all the knowledge in one go. It has to be breakfast का breakfast time पे, lunch का lunch time पे, दर्जा बदर्जा रूह ऊपर चढ़ती है, दर्जा बदर्जा इल्म हासिल होता है। When we become aware, there is a desire, there is a desperation, and that's beautiful. A seeker should have desperation. But सबर भी बहुत मैटर करता है। एक दफा आपको रास्ता मिल गया है, समझ आ गई है, आपको कोई साथी मिल गए हैं, आपको समझ आ रही है बात को, then follow the instructions to the teeth, ताकि आप आगे बढ़ सकें।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, then what you do is वही 2 बोट पे पाँव रखा, इधर भी उधर भी. That doesn't work. That doesn't take you further. Then Mawla says, लेकिन जिसको इल्म नहीं, वो कहता है कि मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं. Those who do not have knowledge, they don't want to go anywhere. I'm comfortable. I'm very settled in my life. I have a schedule to follow. I am somebody. I'm on the part. I have this khidmat. I have that khidmat. I don't even have time. Ilm is not important. Okay, it's not important. I'm reading Imam's farman. लेकिन जिसको इल्म नहीं, वो कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा हूं. They are comfortable in their life. ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन घर नहीं करते. घर नहीं करते. They will listen to Imam's farman, but it will not register. It will not change anything. They will listen to farmans for the sake of it. जो समझ नहीं सकता, उसके दिल में फरामीन कैसे घर करे? इंटेलेक्ट को कभी शार्पन किया ही नहीं है, इंटेलेक्ट को कभी यूज किया ही नहीं है, तो फरमान कैसे घर करेंगे? मौला खुद कहते हैं कि जो समझ नहीं सकता, those who do not understand, how will this faramin register in their head? They will not. So again, here Imam is talking about different categories, different levels. Do you notice that? Number 1, जिसको इल्म नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं जाता, यहीं बैठा. Number 1. Number 2, जिस ऐसे इंसान के दिल में हमारे फरामीन नहीं घर नहीं करते, जो समझ नहीं सकता, उसके दिल में फरामीन कैसे घर करेंगे? Those who even listen, but when they have not used their intellect to understand what is being said. Remember, when we listen to Quran, Farman or Quran, all are in allegories. All are in allegories. We really need to dive deep to understand कि इस जो हमारे सामने है, उसके बातनी माना क्या है? फरमान में इमाम ने फरमाया है कि मेरे फरामीन के एक सेंटेंस के 1000 मीनिंग्स हैं. एक सेंटेंस के 1000 मीनिंग्स है. कुरान के लिए पैगंबर ने फरमाया कि भाई एक कुरान के जो वर्ड्स है उसके 70 मीनिंग्स हैं, 700 मीनिंग्स हैं. एंड वी ऑलवेज थॉट कि इमाम तो हमारा बोलता कुरान है और ये कुरान सामित है, ये बोलता नहीं, ये इमाम तो बोलता है, तो इमाम के फरमान जो है ना वही है. पर इमाम अपने फरमान में कहते हैं कि मेरे फरमान की भी 1000 मायना है. अब वो 1000 मायना हमें समझ में कहां से आएंगे? until we don't work hard, until we don't realize. तो मौला इज सेइंग कि उसके दिल में फरामीन कैसे घर करे, दैट्स नॉट द स्टेज. इसके आगे मौला फरमाते हैं और वो किस तरह एतबार करे. इवन व्हेन दे लिसन, they may understand, but they will have no belief in it. एतबार कैसे करे? They will not have trust in it. Now these are Ismailis we are talking about, not कि outside जमात बात करे. यकीन ही नहीं आएगा उनको. You know, I recall here Imam Sultan Muhammad Shah का first फरमान, मौला says that कि ये क़यामत का ज़माना है, इस ज़माने में माजिज़ात होंगे, लेकिन जो अधूरे दिल वाले हैं उनको माजिज़ात का यकीन नहीं आएगा. मीनिंग कि माजिज़ात तो हो रहे हैं right in front of our eyes, माजिज़ात is happening, but उनको यकीन ही नहीं आएगा. क्यों? They have no understanding of those miracles. They do not understand those miracles. Why? What was wrong with them? Did they not have intellect? Alhamdulillah, very successful people. Because they were half-hearted. ईमान पूरा नहीं था, अधूरा ईमान था. ओके, तो ईमान कैसे पूरा हो? इल्म वाली रूह दर्जा पर दर्जा चढ़ती है. तो आई होप कि हम समझ पाते हैं कि किस तरह से इमाम ने हमें इतने जो शब्द यहाँ हमने इस्तेमाल किए, इतने वर्ड्स जो इमाम के, इमाम इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि इल्म की कितनी अहमियत है. किसी भी अच्छे इल्मी सेशन के अंदर हम बैठते हैं, एक ही एम्फसिस होता है कि टू सीक नॉलेज, टू सीक नॉलेज, टू सीक नॉलेज. जी, क्लास को, ये इल्मी क्लासेस को अटेंड करना, लेक्चर्स को सुनना, इट्स वन लेवल ऑफ लर्निंग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड. आई सेड इन द बिगिनिंग, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू आर हियर एज वी आर सीकर्स. बट इज दैट ऑल? इसके बाद क्या?
अगर पूरा दिन आज 24 घंटे में अगर हमने 1 घंटा इल्म का सेशन अटेंड किया, चलो लेक्चर भी सुना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, but what did we extract? How did we apply the learning to change ourselves? Did we do anything about it or just सुन के I felt good कि चलो मैंने जिक्र किया? Again वो एक दर्जा है, लेकिन जो इल्म हासिल करता है यानी कि इल्म पे अमल भी करता है, those people elevate their ranks. हमारे फरामीन जो समझ सकेंगे उन्हें मीठे लगेंगे, मीठे समझ आएगी उनको, अंडरस्टैंड करेंगे कि इमाम इज आवर बिलवेड मदर एंड फादर, he is trying to help us, guide us, that become better. I have come to this world to give you salvation. I am the doctor of your soul. इमाम के ये फरामीन को हम समझ सकेंगे उस वक्त जब हम ट्रूली अपने दिमाग को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करेंगे टू अंडरस्टैंड ऑल दिस नॉलेज. देन मौला सेज हमारे फरामीन के मुताबिक नहीं चलोगे तो तुम परेशान होंगे, परेशान होंगे. मौला इज वरीड, दैट्स व्हाई मौला इज एक्सप्लेनिंग कि यू नो इफ यू डोंट फॉलो you will put yourself into difficulty. Why? Mola explains it further. वहां लोहे और आतिश के गुर्स तुम्हारे सर पर मारे जाएंगे, तब तुम वहां पुकार करोगे और कहोगे कि तौबा तौबा. दिन रात गुरंज सर पर लगेंगे. बेखबरी का गुर्स बहुत ही अजियतनाक होता है. आतिश के गुर्स से डर के खौफ की वजह से इबादत करे वो मोमिन नहीं. सो मौला इस फर्स्ट एक्चुअली बहुत ही विजुअल पिक्चर मौला ने दी हमको, डरावनी खौफनाक दिल को हिला देने वाली. कि मौला फरमाते अगर तुम फरमान नहीं मानोगे तो तुम परेशान होगे. वहां पे क्या होगा, आयन के बार्स, राइट, हार्ट विद फायर, लोहे और आतिश के. सो इट्स लाइक आयन बार्स व्हिच आर hot and you'll be beaten by it. Such a drastic visual, imagination ki ya Mola panah, ya Mola aman, ya Mola, Mola we are smileys, we are your followers, Mola do not punish us like that. But Imam is saying if you will not follow my faramin, this is the end result. Then Mola says कि तब तुम वहां पुकार के कहोगे कि तौबा तौबा, night and day हमारी ये हालत होगी. Now if our Mola loves us, Mola is Rahman, Rahim, he is forgiving, he is Ghafoor, will he not forgive us? ऐसी सजा, ऐसी punishment? And Imam has said in his farman that खुदा मदारी नहीं है जो तुमको रस्सी से खींचे. It is not that at the end day Mola will pull us out. If you don't do what you are supposed to do, don't expect me to pull you out. Mola says that. क्यों ऐसा मौला बोलते हैं? क्या मौला रहमान नहीं है? He is Rahman, he is Rahim, he is forgiving. But again, we cannot be behaving as a child immaturely. In the worldly life, this is very hard for us because we all are adults, we all are mature. We live in a house, apartment, whatever. We drive our cars, we drive on the road. If we don't pay insurance, if we don't follow the rules and laws, we will be put in the prison immediately. Our house will go into foreclosure. Why? Because the consequences are so clear that we have become accountable to follow all the rules and regulations. We like it or not. We don't like Uncle Sam, but we will have to follow. We will have to do what is expected of us. Kyun? Consequences are very clear. And we will not dare to make mistakes. Exactly same thing Imam is telling us. He is Rahman, he is Rahim, he is Ghafoor, but the work which we need to do, we need to do it. We cannot pamper. We cannot pamper ourselves and just say no Maulana Rahim kariye, Maula Rahim kar se. No, we cannot do that. If that's how you think, Maula has talked about you. If that's what you're thinking is, Maula says जिसको इल्म नहीं है वो कहता मैं तो कहीं भी नहीं जाता, मैं यहीं बैठा. Maula knows there are people like that in us, among us.
So those who are sincere, Mawla is showing us the consequence. कि that time अगर तुम तौबा तौबा दिन रात भी करोगे, then also we will not be forgiven. In opposed to that, we just talked about check pulse. We talked about कि अगर हम every night को हमारी नफ्स को तपासेंगे, we will reflect कि हमने पूरे दिन में क्या किया है, and we will do गिरियाज़ारी जिक्र कि या मौला मेरे से अच्छे काम नहीं हुए आज के दिन, आज के बाद मुझे और अच्छा बनना है. You know, all those thoughts, all those intentions are written as good deeds. That this Mu'min as-Salik is sincere, is serious, is aware where he or she made a mistakes and they do not want to repeat it. And they are seeking help from Allah not to repeat those mistakes. Totally different level of that Mu'min. The more we learn, the more we understand. The more we learn, the more we elevate. The more we learn, the more we stay with Yadgiri. Our consciousness becomes stronger and stronger. We are very clear and reminded of the consequences. We will not forget. Then Mawla says, बेखबरी का गुंज बहुत ही अजियतनाक है. बेखबरी, those who were unaware. Those who are blind here, they'll be blind there. Meaning they didn't even see here what was the true knowledge here. They will not be able to see there to they are so unconscious. Then Batni eyes are opened up. Now there is no lack of awareness. And it would come as a shock. बेखबरी का गुंज बहुत ही अजियतनाक है. It would be so painful कि पता तक नहीं था. Oh, I wish, I regret, मुझे पता होता तो मैंने कर लिया. But here, then Mawla says, आतिश की गुंज के से डर कर खौफ की वजह से इबादत करे वो मोमिन नहीं. Momin is not the one who is, scared and fearful and that's why he or she does ibadat. मोमिन का जो हकीकी डर है वो ये कि खुदा के दीदार से दूर ना हो जाऊं, उससे डरना चाहिए. The true मोमिन is seeker of मौला's दीदार. ये समझ कहाँ से आती है कि भाई मुझे मेरी हेल्थ अच्छी कर दे, मेरी बिजनेस में मुश्किलें खत्म कर दे, मेरे बच्चों के एग्जाम में उनको पास कर दे, ये जॉब का इंटरव्यू दिया इसमें अच्छा कर दे. ये तमाम वर्ल्डली प्रेयर्स हैं. इल्म में आके पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इमाम के नूरानी दीदार. All right, one of the friends said it's too late, so I have to stop. Okay, so we will continue from this paragraph next. All right. So if it is too late, how about we deal with these questions next time? Shukran wala, shukran wala. Thank you so much, friends, for joining. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, thank you. Yali Madad, thank you very much. Shukran wala, shukran wala. Shukran wala. Yali Madad, thank you very much. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad, thank you. Yali Madad. Yali Be Madad, safe. Bye Melissa. bye. Yali Yali Sultana, bye. Yali Madad. Yali Madad.